Daju used to be a carpenter in Kalimpong. Again, see, these are very ordinary people, you know. LB Daju was a carpenter. When you hired LB Daju to do work, he was the most economical carpenter, because if you gave him this to make a pelmet, he will give you pelmet and he will give you 2 doorknobs. Okay, he ensured he used every inch of that wood. So all the people used to invite LB Daju to do work. And one day LB Daju disappeared. He disappeared. And people wondering, you know, what happened, what happened? They went to his house. That's when his wife said, you know, he was taken. Next day they found him with the crowbar through his eye socket. They had killed him. Why? Because he was making the gun butts. He was carving out the butts for one of the factions. So the other guys picked him up and, you know, sort of got rid of him. So I wanted to sort of get those stories. Today I've met like non-Nepali speaking or non-Hills people emoting with the story, and that I think is a boon, because, you know, as I look at it, yes, I'm Bhattacharya, yes, more Bengali babu ke garne, I can't help that, okay. But on a larger front, if the story of, you know, the Hills goes out to a pan-India audience or a pan-world audience, and it gets read about, I mean, that's a great thing. I had a reader who was literally crying at the end of the book, and she called up through a messenger and she said, I love the book. There was a girl today who came to meet me at Oxford, and she was, you know, emotionally moved. She said, for the first time we had correct representation of our community. You know, Sappoile, you know, they looked down on us, but for the first time it was a story being told through our eyes. You know, where we are not ridiculed. You know, we are not made to feel a minority, but this is a, I mean, these things, I mean, obviously as an author, you feel touched and emotional as well. Especially for someone who's grown up in the Hills, you know. I am more Hills than Bengali. So it's, you know, it's very emotional, you know, sort of for me to be writing this book. I want to read the first time when I touched a gun. Okay, you know, Holmes. I was in the Holmes at that point of time. It was after school one day. Tukai saw Roshan heading out in the opposite direction to his home. Where are you off to? He asked. Roshan, who had been lost in his thoughts until then, raised his head and he said, I'm going to meet a friend. A beat. And then, you want to join me? Tukai was beyond curious now. Which friend? Where? Roshan looked around, suddenly alert, and then tested the waters with a low whisper. You wanted to know about the JNLF, right? Tukai was taken aback at the suddenness of this offer. Sure, he wanted to know about the JNLF, but he wasn't expecting a physical, face-to-face, practical lesson. He gulped. He was suddenly a tad nervous. What if I get into trouble? What if my parents find out? This friend works for the JNLF. It was Tukai's turn to whisper. Yes, and he's a wanted man. Roshan watched Tukai's expression change from nervousness to fear as he said this. I think I have to go back home. Tukai suddenly had no plans for geopolitical lesson. Hey, stop being a darpok Bengali. Come on. He lives in a village basti just outside the school. I'll show you something fun there. Nothing will happen. Come. After walking for almost half an hour, Tukai noticed that the British cottages of the school had given way to a small hamlet with huts made of mud walls and thatched roofs. He knew that he was no longer within the safety of the school campus. Roshan read Tukai's mind and smiled. Tooks, we are no longer in the residency anymore. Tukai gulped. Some of those houses were constructed using random tin sheets and wooden planks.
The concrete road dissolved into mud tracks. There were little sheds with animals, cows, goats and pigs. The smell of dung hit Tukai's nose as they passed by a cowshed. Even the clothes that the people were wearing had changed from the predominantly western shirt and pant as seen in Kalimpong town to a mix of the traditional Daura and coats, which the elders were wearing. A radio somewhere tuned to All India Radio Kurseong station played the strains of the song Maya ko Barima, Priti ko Pula, Sangali Rakhe ko Kusume Rumal. This is the real Kalimpong, Roshan explained as he walked into the village. Tukai had to dodge the scampering chickens and the roosters that walked about owning the road. Some of the villagers looked up to stare at them. Two schoolboys walking into their territory. A little boy aged 6 with a long dollop of snot dangling dangerously above his lips watched them. And just before it separated from its owner, the little boy pulled it back home with a loud snort, and like a yo-yo, the string of snot rapidly retreated into his nasal orifice. Roshan arrived at the door of a small hut. It looked like the other houses in the village. He knocked on the wooden door. There were sounds of scurrying from inside, and then a voice asked, "Go, Bhattacharya, Ma Roshan." There was a pause, and then the door opened. A scrawny man wearing a sleeveless and tattered Che Guevara tee with a month-old beard on his face peeped out. There was fear in his eyes, and he seemed jumpy. Satisfied that it was just the two of them, he moved aside and let the boys enter, and then quickly locked the door behind him. The house, musty and old, was actually just a room, divided into a sleeping and a cooking area. The sleeping area was a small, ramshackle, steel folding bed with a thin mattress on it and a stained pillow without a cover. Tukai noticed the one-word tattoo on his host's right arm. Phoebe. F-E-E-B-E-E. A misspelled tribute to the actress Phoebe Cates, who Tukai guessed often kept this man company in his dreams. "What are you doing here? And who's this?" Pawan asked in a tone that conveyed nerves more than anything else. "Shankar Daju sent some money for you, and this is my friend. He's new to the school. He keeps asking me about what's going on. So I thought I'd show him." Roshan smirked. He looked at me and said, "Hey, this is Pawan Daju. He's my cousin brother." Pawan said, "Have you gone mad?" Pawan hissed through his tobacco-stained teeth. "You can't bring in people here. Do you think this is a tourist destination? I'm the sunrise at Tiger Hill. Huh? No one needs to know anything or see anything. This is not a fucking mela." Suddenly all the bravado seemed to have left Roshan. He took out some money from his school bag and handed it to his cousin, and then very softly requested, "Pawan Daju, please, can you show him a pipe gun?" पहले मैं सोच रहा था कि ये किताब इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि नए जनरेशन जो है उनको पता नहीं है कि आंदोलन में हुआ क्या था। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मेरा किताब जो है गोरखालैंड का जो आंदोलन है उसका इम्पैक्ट क्या रहा लोगों के ज़िंदगी के ऊपर, उसके बारे में है। इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल लेसन ऑन द आंदोलन एंड द सोल्यूशन फॉर गोरखालैंड, नो, इट इज़ अबाउट द पीपल और उनके ज़िंदगी में क्या तनाव आया उसके ऊपर है। और ये सब स्टोरीज़ हिस्ट्री में आप पाएंगे नहीं, क्योंकि उस ज़माने का जो सरकार था या जो भी था वो उन्होंने वाइप आउट कर दिया है। और क्योंकि ये मामूली इंसानों का स्टोरी है तो वो कभी मेंशन ही नहीं हुआ है ना। जैसे 12 साल का जीना थापा की स्टोरी है या डेविड अंकल जो डेविड मुखिया की स्टोरी है, ये सब यू वोंट गेट इट इन हिस्ट्री बुक्स और इन ऑन द इंटरनेट। तो आई वांटेड द ऑर्डिनरी स्टोरीज टू कम आउट, क्योंकि क्या होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में जो है आम जनता ही फंसता है बीच में। और आंदोलन के दौरान बहुत आम जनता जो है सफ़र किया है, तो उसके बारे में मुझे लिखना था। और ये भी था कि मेरा बोर्डिंग स्कूल का लाइफ जो है दोस्तों के साथ शरारत वाली लाइफ जो था, तो उसके बारे में भी लिखना था। और ये किताब जो है ये कालिम्पोंग के लिए लिखा हुआ है, टू द पीपल ऑफ कालिम्पोंग।
तो जो भी आपने इसमें आपका लव स्टोरी प्लस आंदोलन जुड़ा हुआ वो लिखा है आपने, इस किताब में कोई ऐसा चीज़ है जो आप लिख नहीं पाए, आपके मन में था, आपने देखा था उस टाइम में, जो लिख नहीं पाए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे जितना लिखना था वो मैंने लिखा। देखिए, और क्या है कि आंदोलन के, जब आप आंदोलन की बात करें तब इतने सारे स्टोरीज़ हैं, करोड़ों में स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। तो इतने सारी स्टोरीज़ हम कैसे इंक्लूड करें, या मैं जान भी नहीं पाऊँगा, है ना। तो जितना मैं रिसर्च किया, जितना मैं जानता था, तो उतना ही मैंने लिखा। और मैं चाहता हूँ कि जो और ऑथर्स हैं रीजन के, वो भी लिखें ह्यूमन लाइफ के ऊपर और ह्यूमन स्टोरीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ह्यूमन स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए, जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये जो आपने बुक तो रिलीज़ कर दिया, उसको कोई वीडियो फॉर्मेट में हिस्टोरिक रखना, आर्काइव के लिए रखना? किसी ने एक एक्स इंडियन आर्मी जो है ऑफिसर ने बहुत ही अच्छे से लिखा कि वो चाहते हैं कि ये जो किताब है ये ऑफिशियल आर्काइव में डाला जाए, क्योंकि इतने अच्छे से डिटेलिंग किए गए स्टोरीज़, तो इट शुड बी इन द ऑफिशियल आर्काइव ऑफ द गोरखा मूवमेंट। मैं तो चाहता हूँ कि ये वीडियो में उतर आए स्टोरी। मेरा राइटिंग स्टाइल भी बहुत विजुअल है, तो आप जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं, आप एक पिक्चर देख रहे हैं। एक दोस्त ने भी कहा कि आई फिनिश्ड वॉचिंग हिल्स आर बर्निंग इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई फिनिश्ड रीडिंग हिल्स आर बर्निंग। तो मैं तो चाहूँगा कि ये एक सीरीज़ बने या फिल्म बने। आप यहाँ पर तो जितना भी रीडर्स हैं यहाँ पर, तो नेपाली लैंग्वेज में वो लोग पढ़ते हैं, नेपाली लैंग्वेज से कोई सोच है आप इसको ट्रांसलेट करने के लिए? हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी है कि नेपाली लैंग्वेज में होना चाहिए, इसका अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रीडर्स जो है नेपाली में पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरा तो कोशिश अभी चल रहा है कि ये मैं एक नेपाली एडिशन भी निकालूं और अनुवाद करूं इसको। तो आई एम होपिंग कि हो जाए जल्दी। तो आपने जो ये किताब जो लिखे है, ये तो खाली ये पहाड़ी स्थित दार्जिलिंग कालिम्पोंग एरिया के लिए खाली है, ये इशू जो है आपने चूज की है, लेकिन बाहर में तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाहर में जितना भी है, लेकिन बाहर से रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है, सुनने में आए। हाँ, क्योंकि देखिए युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट या लव या बच्चों का कहानी, ये यूनिवर्सल है ना। ये सब उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं। अगर आपके सामने अगर एक प्यारा सा बच्चा लाया जाता है और वो गूगू गूगू करता है, तो आप बोलेंगे ओ हो। वही बच्चा अगर अमेरिका में भी सामने किया जाए तो वो भी बोलेगा ओ हो। तो एक कुछ यूनिवर्सल स्टोरीज और थीम्स हैं जो हर जगह और हर कंट्री के लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए ये किताब जो है यूएसए में नंबर 1 के पोजीशन पे डेब्यू किया इंडियन राइटिंग में, अमेज़ॉन में, ऑस्ट्रेलिया में किया है, इंडिया में किया है। तो मुझे लगता है इसी दौरान, ऐसा नहीं है कि लोगों को क्योंकि वो जानता नहीं है उनको पढ़ना नहीं है, नहीं, ये भी हो सकता है कि जानते नहीं है, तो इसीलिए उनको एक इंक्विजिटिवनेस होता है कि मैं पढ़ के जानूं क्या हुआ था। तो ये कितना टाइम फ्रेम का है, ये जो 1986 से शुरू होकर कितना तक का है? मेन स्टोरी जो है 2 साल का है, 86 to 88, लेकिन it goes back to 1960 and it goes forward to 2022-23 as well। लेकिन मेन जो स्टोरी है वो 2 साल का है। उसके बाद भी 2007 हाँ, क्या हुआ था, जो कैरेक्टर्स है, क्या कोई थिंकिंग आ रहा है? किताब के एंड में मैंने एक अपडेट दिया हुआ है कि अब ये पोजीशन है,
लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल किताब नहीं है और आंदोलन का हिस्ट्री का भी किताब नहीं है, तो इसीलिए आई डिड नॉट वांट टू गिव द हिस्ट्री सो मच एज द इमोशन ऑफ द स्टोरी। आपको लगता है कि आपने तो फेस किया है, एजुकेशन फेस भी किए है, अपने किताब भी लिख लिए, आपको लगता है कि जो आंदोलन माने गोखलैंड क्या होना चाहिए गोखलैंड, या क्या है, क्या क्या पर्सनल व्यक्तिगत विचार क्या है? पर्सनल व्यक्तिगत विचार ये है कि मैं एक लेखक हूँ और क्योंकि ये मेरे साथ एक्सपीरियंस और मेरे साथ भी नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था, तो इसीलिए ये किताब मैंने लिखा। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तो लीडर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य नहीं, एक ही कंसर्न है कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है। क्या उनको नौकरी मिलेगा, क्या उनके गैस के सिलेंडर का दाम 1500 से लेके 800 होगा, या उनको सैनिटेशन मिलेगा, क्या उन्हें बाटो ठीक हुन्छ कि हुँदैन है। तो that is the entire thing of when we talk about revolution and andolan, we get lost in big things. We often forget of how the common people suffer and the needs of the common people. तपाईँ त आफै कालिम्पोङमा बसेर पढ्नु भएको, पहाडलाई एकदम नजिकबाट बुझ्नु भएको छ है। हजुर। र त्यो टाइमको तपाईँले किताब लेख्नुन्जेलसम्मको र अहिलेको स्थिति आजको दिनसम्मको हेर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको त अन्तर पाउनुहुन्छ, कति माथि गयो या तल झऱ्यो हाम्रो राजनीतिक स्तर या अन्य अन्य? राजनीति होइन, तर म सिभिकमा कमेन्ट गर्छु। सिभिक सेन्समा अनप्लान्ड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, नट ओन्ली इन कालिम्पोङ, दार्जिलिङमा पनि हुँदैछ, पहाड सबै जग्गामा हुँदैछ। इट इज अ डेन्जर टु द हिल्स हैन। अनप्लान्ड कन्स्ट्रक्सन, सिभिक प्लानिङ छैन, स्यानिटेसन छैन, ओभर क्राउडेड। I remember Kalimpong main road it used to be quite empty. Now one side the cars are parked, then you're going through the other side. Even Darjeeling, it used to be relatively empty. That is my main thing, of the change that you see, visible change. आँखों देखी जो change हुँदैछ वही civic planning ही छैन, and later on it will become very problem. It's already a problem. पानी छैन है, Darjeeling is suffering, Kalimpong पनि suffer गर्दैछ. My favorite scene is the water pipes. एउटा pipe आउँछ, 500 pipes are attached to that one pipe, and then you give money also for maintenance. मेरो pipe हेर्नु त पानी आउँदैन घरमा. Then that person knows which pipe is your pipe, among the 500 pipes. So it is, we need to have civic planning. We need to protect the hills, environment protect गर्नु पर्यो नि। अन्य प्रोजेक्टहरु यो पहाडलाई लिएर कुनै सोच्नुभएको छ त राइटिङमै पाए पनि? हैन, अभी अगला मेरो जो दुईटा किताब आउँदैछ, एउटा छ हरर, भूत प्रेतको विषयमा, रियल हन्टिङ्स, अन्त सेकेन्ड किताब जो चाहिँ एक पहाडको कालिम्पोङको सन्तान, अन्त भेरी ट्यालेन्टेड सिनेमाटोग्राफर विनोद प्रधान दाईको म अटोबायोग्राफी लेख्दैछु अहिले। सो आइ एम राइटिङ हिज अटोबायोग्राफी। सबैको थाहा छ विनोद प्रधान दाई, देवदास, ही इज शॉट देवदास एन्ड परिन्दा एन्ड 1942 लभ स्टोरी। He's a fantastic cinematographer. So I'm writing his autobiography because also we belong to the same school, DGH. So बस सबैको धन्यवाद यो हेर्नुको लागि। अन्त please read the book. It's called The Hills Are Burning, and I hope you like it. धेरै धन्यवाद।